हेलो, आप सबको मेरे नमस्ते। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। सो टू स्टार्ट विद इन एजुकेशन सिस्टम वी हैव एक्चुअली टू कंपोनेंट्स. One is school education and second is higher education. So to begin with school education, let me tell you first about the status of school education in India. तो ऐसा है कि हमारे पास हमारे देश में 24 करोड़ बच्चे हैं, उसमें 1 करोड़ टीचर पढ़ाते हैं और 15 लाख स्कूल हैं. तो एक्चुअली में जो मेन कमी हमारे सिस्टम की जो स्कूल एजुकेशन में है वो है सेकेंडरी स्कूल्स की. एक्चुअली सेकेंडरी स्कूल्स में हमारा एनरोलमेंट रेशियो इज मोर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 50%. बट दैट्स नॉट द आइडियल. वी वॉन्ट under NEP 2020 we want the gross enrollment ratio to be 100% in every aspect, in every stage of the education. So what needed to be done? Why we have that much less enrollment ratio in secondary education? So secondary education में enrollment ratio में कम होने का कारण सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी. हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्कूल्स का वो बहुत ही कम है. अप्रॉक्सीमेटली 38% स्कूल्स जो अर्बन एरियाज़ में हैं वो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और रूरल एरियाज़ में सिचुएशन और भी ख़राब है, डेट इज़ जस्ट 17%. सो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक हमको सेकेंडरी स्कूल्स चाहिए हमारे देश में. और दूसरी बात ऐसा है कि सेकेंडरी स्कूल्स में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है. क्यों? क्योंकि जो एज है डेट इज़ फ्रॉम 14 to 18, डेट इज़ फ्रॉम क्लास 9 to 12, जिसमें कि सेकेंडरी स्कूल हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं. एक्चुअल में उसी एज में बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया जाता है मेजरली ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर. दिस इज डाटा मेंशन इन इकोनॉमिक सर्वे विच सेज दैट इस गैप को भरने के लिए एक तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए पहले तो. दूसरा, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो भी इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हमको चाहिए कि हम अपने सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में वोकेशनल दैट इज स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंटीग्रेट करें, ताकि हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो उस एज ग्रुप के बच्चे को चाहिए. क्योंकि हम उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे यहाँ पे अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम आपको उसको वो स्किल दें जिससे कि वो उसी फील्ड में और अच्छा कर सके, और उसका जो लेवल है, उसका जो काम करने का है, उसका जो स्किलिंग है उसको हम अपलिफ्ट कर सकें, उसको हम उसकी पॉवर्टी को किसी तरीके से कम कर सकें, और उसको ताकि उसका फ़ायदा हो एजुकेशन से, ना कि जस्ट वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के निकल जाए. उससे कुछ नहीं होता. वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए. उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. इसी से सेकेंडरी एजुकेशन में हम वो घटा सकते हैं, अपना ड्रॉप आउट घटा सकते हैं और एनरोलमेंट रेशो बढ़ा सकते हैं. तो ये हो गई मेजर प्रॉब्लम जो है, बड़ी प्रॉब्लम है ना. तो दूसरी प्रॉब्लम की जो हम बात करते हैं तो वो है कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन की. हमारे स्कूलों में हम देखते हैं स्कूल सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होते, स्कूल पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है. तो इसके लिए हमको चाहिए कि पूरा कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से होगा क्या? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से अकाउंटेबिलिटी तय होगी. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से बच्चों में सोशल स्किल्स बढ़ेंगी, उनमें इमर्जिंग सोसाइटी में इमर्जिंग इश्यूज़ को जानने की क्षमता, उनको समझने की क्षमता बढ़ेगी, और टीचर्स को चांस होगा रिकॉग्निशन का. क्योंकि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है तो कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी भी बिठाएगी और अच्छे टीचर्स को रिकॉग्निशन भी देगी. इससे टीचर मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करेंगे. इसका जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, आपने सुना होगा एक स्कूल है तालुका खेड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की, डेट इज़ जिला परिषद स्कूल जालिंदर नगर. वो एक ऐसा स्कूल है जिसने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके दिखाया है और वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल बना है. उसको वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया गया है बाय T4 एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ऐसा क्या किया उसने? तो एक्चुअली उस स्कूल में टीचर्स का कमी था. उस स्कूल में एक मॉडल लेकर आए वो मॉडल था सब्जेक्ट फ्रेंड मॉडल. उसमें वो क्या करते थे, जो पीयर्स होते थे वो अपने साथ वाले बच्चों को पढ़ाते थे. उनको वो नए नए सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो भी पढ़ाते थे. और धीरे धीरे ये सब देखते हुए वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वॉलंटियर करना शुरू करा. वो टीचर बन के आते थे, अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो थे वहाँ के, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई किसी और सब्जेक्ट में उसने BA कुछ ग्रेजुएशन किया है तो वो आके वो सब्जेक्ट पढ़ाता है. और इस तरीके से उनका सब सब्जेक्ट पूरा हुआ और वो बेस्ट स्कूल बन गया. अकाउंटेबिलिटी सेट, टीचर को रिकॉग्निशन मिल रहा है, बच्चे कुछ, और मर्जिंग इश्यूज और जितने भी सोशल स्किल्स उनमें होनी चाहिए सब है. कोऑपरेशन करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं.
बेस्ट एग्जाम्पल। एंड ऐसे ही मॉडल्स हमारे पास और भी बहुत जगह हैं, जैसे कि हरियाणा का आओ स्कूल चले, दैट्स ऑल्सो कम्युनिटी प्रोग्राम टू एंगेज, टू मोटिवेट कम्युनिटी टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, एंड देयर many states are doing this. UP, Odisha, and many more states have such kind of models, such kind of community participation models. So the next thing I want to discuss now, the second aspect of education, that is higher education institutions. So when we come to higher education institutions, actually there we have the major problem is of gross enrollment ratio. I have told you in school education we have 24 crore students, but in higher education there's only 4.46 crore students. Data is from economic survey, you can check. So where are these 20 crore gone? Only 4 crore, 4.46 crore, just 29.3% or 29.3 to some 29.56% enrollment ratio only. Where is the rest going? We don't know. And not only this, the major problem is that we have higher education institutions like IITs, NITs, IIMs, AIMS, but we do not have good quality state public universities. And let me tell you, 81% of these even 4.46 crore which is coming to higher education is 81% of this, is approximately 3.84 crore is in state public universities only. And you know the situation of state public universities very well. They are at the grim, they are at the very bad position. The quality of education is very poor, except some of the few state public universities. But nice thing is that many states are now coming up and correcting this thing. Like Gujarat has in 2023 passed its State Public University Act, where it granted more autonomy so as to improve its state public universities. And similarly, Maharashtra's faculty development program is also there, which is doing the same thing. So necessarily, the necessity of the time is to rectify these SPUs, that is state public universities, make them correct and make them work. Because if when they will work, this country will work, these students will work. Because you know how much of the crowd get into IITs and IIMs, maximum go to the state public universities. Then the next important topic is within this higher education, next crucial problem is of internationalization of education. So you know how many students all over the world go internationally for education. It's about 70 crore students every year pursue international education, and how much come to us? Just 79,000. Where are these going? Where are the maximum chunk going? They are going to UK, US, Australia, France, Germany. Why are they coming to India? What we have, let me tell you, don't underestimate our system. We have the one of the world's largest higher education system. We have that capability that we can host large amount of these international students. But why we have the cheapest STEM education, we have the cheapest management education, then why aren't we able to do? Because the less presence of our education institutions at the world level, less world recognition, less presence in the world universities. And not only this, there are some of the regulatory frictions as well, which contribute to this condition of ours in international education. So what we can do is we can actually go beyond degrees. We can offer yoga, Ayurveda certificates. We can encourage our higher education institutions like IITs, IIMs to collaborate with some of the foreign higher education institutions, either engaging in student exchange programs or joint degrees or anything else. And some of the other things like semester based models and small degree courses or diploma courses through which we can attract some of the international students. Why we want to get them to our country? Because if they will come to us, our education institution will improve, our system will improve, we would be able to tackle the brain drain from our country, we would be able to do better. So what
we have done till now in this respect. So let me tell you, don't think that we haven't done anything. UGC regulation 2022, UGC regulation 2023. 2022 regulation allowed for collaboration between higher education institutions of India and foreign higher education institutions. And similarly, 2023 allowed some of the foreign universities to set up their campuses in India. And congratulations, 15 universities have been approved. That is, they will be setting their campuses in India. And second thing is, 100% FDI is allowed in higher education institutions, we all know. And not only this, we have done many more things, like we have HIFA, which fund higher education institutions to build world-class infrastructure facilities. And we also have a scheme known as Institute of Eminence scheme, which was started in back to 2017. And under the scheme, actually, under this scheme, some of the institutions are labeled as Institute of Eminence. Target is of 12 public sector universities and 12 private sector universities, but till only 8 public sector universities and some 4 private sector universities are under the list of Institute of Eminence. And that also, they are like IIT Kharagpur, IIT Bangalore, IIT Bombay, IIT Madras. These institutes are there, and in private also some bits and something else are there. So what we learn today is that our education system needs improvement, and I have told you the improvement we need. So I hope you get a lot from this video. If you have any doubts, please comment and share. I will try to respond to them. Thank you.